Good morning, everyone. I am Kajal Patel from Parul Institute of Engineering and Technology, Diploma Studies Computer Department. Now, today we have expert session on how to become an entrepreneur. So, for this session, we have expert Mr. Jagjoti Singh Kandari from New York, USA, and he is director in Client Fusion and Client IIC company. He has a 18 years experience at a senior management level in a financial service, and he is also the principal investing officer at a at a invest at a exemplary capital IIC and invest into four major automation and recyclable industries. And he is also on board team on Thor Global Defense and Procure Box. So I over to Mr. Jagjoti Singh. So you can now start your session. And thank you for accepting our invitation. Right. Thanks. Thanks for calling me. So thank you everyone for having me here. So I've been introduced as an expert. To be honest, I'm still an expert in making. Every day is a new learning, right? So you're as good as your yesterday. So I will refrain myself being talked as an expert here, but I will definitely want to talk to you about my experiences till date as an entrepreneur. As a professional, I've worked in financial services with capital market participants like Religate, Tata TD Waterhouse, and Aditya Birla Capital, very renowned names in India, of course. And that's where, has been an exposure to me, meeting a lot of investors and as well as meeting a lot of promoters of different businesses. So I've been interacting for last 18 years of my life with different promoters, young and old, all conglomerates trying to do startups or something of that sort, whether technology or manufacturing. So I've seen it all, and I've seen the boom of 2007, the burst of 2007, financial crisis that have come. And all these things today, and with the evolution of technology, has given a different perspective to entrepreneurship. It's now a very capital driven market. So capital plays an important seed, but definitely I think there's more than that, which every capital market looks into an entrepreneur. And that's something that I'm going to talk about today. आज का जो कंटेंट है, मैं आपको कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाना चाहूंगा, ना देना चाहूंगा, क्योंकि हर एक चीज गूगल पे अवेलेबल है. तो इस सेशन का कोई फायदा नहीं है अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो काफी हद तक गूगल पे अवेलेबल है. It's more like a one-on-one talk on this presentation, और ये talk है जो मेरे खुद के अपने personal experience है. And based on that experience, trust me, एक बहुत important disclaimer है जिससे पहले आप मेरी जितनी भी information है वो consume करें कि ये मेरे personal views हैं. और सबसे important बात, काफी हद तक मैंने इस information को और अपने experiences को validate करने की कोशिश की है. Validation काफी हद तक renowned sources से है, but at the end of the day मैं उन पे कोई भी authentication नहीं डालना चाहूंगा, because today's digital world, they're good things, but at the same time they're very incredible and not to be verified things which are also available. So I'm reserving my right to be wrong. और मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, एक बार आप जाके जरूर वैलिडेट करिए, क्योंकि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसको दी गई इंफॉर्मेशन वो हमेशा वैलिडेट करते हैं. You never live a life of assumptions. जिन assumptions को validate किया जा सके, एक entrepreneur का सबसे पहला principle है कि उन assumptions को validate करें और फिर अपना action लें. So before we start the presentation forward, my request to you, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ये presentation पे है, पर उसको validate जरूर कीजिएगा. So guys, who's an entrepreneur, right? And again, a bookish language, to be honest, it's certainly not bookish, right? A person who takes risk and works on an idea and an attempt to make a profit. Now, there are three very different elements that has been given in this small statement. First is risk, right? Because you're moving into a very uncertain world. आप समझते हैं कि आपका ये आइडिया अच्छा होगा, आप माने ना माने ये बहुत अनरिस्की वर्ड है. हर एक इंसान जब कल सुबह एक एंटरप्रेन्योर उठता है, उसके पास हजारों आइडिया होते हैं और वो ये समझता है कि वो अगला फेसबुक है और वो उसको सक्सेस बना देगा. पर जब तक वो ग्राउंड रियलिटी को टच नहीं करता,
उसको अपने रिस्क का बारे में पता नहीं होता। और जब वो ग्राउंड रियलिटी को टच कर चुका होता है और कैपिटल और टाइम इन्वेस्ट कर चुका होता है, they start realizing the risk that they're actually getting into. And that uncertain thing is an excitement. That uncertain thing is also a stress. An important thing is an idea. और बहुत जरूरी नहीं है कि आपका आइडिया इस दुनिया में सबसे अलग आइडिया और सबसे जेन्युइन आइडिया हो। कभी भी कोई ऐसी चीज करने की कोशिश ना कीजिए, राइट? क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आपका आइडिया सबसे जेन्युइन है, तो मैं मान के चलूंगा कि 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि आप एक अजम्पशन की दुनिया में जी रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि आपका आइडिया इस दुनिया में नायाब आइडिया है। क्योंकि एक इंसान के दिमाग में रोज लाखों आइडिया आते हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तो कोई ना कोई इंसान इस दुनिया में 7 billion पॉपुलेशन मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट आइडिया, मे बी ब्रिलियंटली देन यू। बट द ओनली थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, इट्स अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट एन आइडिया। सो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का आइडिया लेके इम्प्रोवाइज करते हैं, which I believe because I've experienced United States। आप में से कई लोगों ने जो यूएस और यूके एक्सपीरियंस किया होगा ट्रैवल, और इंडिया में ट्रैवल किया होगा, I will rate Ola as a far better operational and a UX UI experienced company over Uber. And that's where I see that Uber came in first, but Ola adapted an idea and it became a very, very successful company. Unfortunately, still burning a cash, but both the companies are burning the cash. Uber still burns lesser cash and picks up major rights. So what's important right now is not the idea, it's also about the execution of that idea. You really don't need to have an original idea. You can actually improvise on an idea which is already existence. And I must tell you, आपने एक कार का नाम सुना होगा, उस कार का नाम था रीवा, RIVA। 2016 ये बैंगलोर का एक स्टार्टअप था जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कार बनाई थी इंडिया के अंदर। और इनफैक्ट उस वक्त वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल कार के नाम पे लोग हंसते थे। मैं उस कार को दिल्ली की सड़कों में घूमता हुआ देखता था तो मैं खुद एक बार हंसता था कि एक कार कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो कार आज की डेट में, वो टेक्नोलॉजी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो कार जो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने 2016 में खरीद ली, एंड all of a sudden we realize in 2017-18 there's a new revolution that happens around an electric vehicle, and this new revolution is led by a company called Tesla, right? But we never realized that this idea was already there and this was beautifully executed by a company in Bangalore, but someone took it to a different level. That's idea, right? आप में से कई लोग आज इलॉन मस्क के बारे में आप उनके फैन होंगे, राइट? विच इज होना भी जायज है। आई थिंक ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट द राइट नाउ, राइट? दैट्स व्हाट डेस्टिनी डज टू यू। पर आप मान के चलिए उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की है स्टारलिंक्स। ये स्टारलिंक का आइडिया कोई नया आइडिया नहीं है। ये स्टारलिंक का आइडिया सबसे पहले भारतीय एयरटेल कंपनी ने यूके गवर्नमेंट के साथ बना के वन बैक कंपनी बनाई थी 2008-2009 के अंदर, जो 2011 तक आने तक बैंकरप्ट हो गई। It started its operation once again. So some of the things that Elon Musk is trying to do, which we think are revolutionary, was attempted at some point of time. The only thing that gentleman probably would have done, and I do believe that he's definitely a brilliant man, he's adapted some of those ideas to a great level. And another most important thing, everything that you do in an entrepreneurship, it leads you to one goal, and that's about making money. That's about making profit. If it doesn't make money and satisfy something, I'm sorry, it's not entrepreneurship, it's foolishness. So there's a very thin line, बहुत ही पतली लाइन है entrepreneurship और foolishness के बीच पे, और उस लाइन को डिफाइन करती है प्रॉफिटेबिलिटी। कई चीजों को पागलपन भी कहा जाता है, कई चीजों को प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी कहा, कई चीजों को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। थेरानोस एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और थेरानोस एक बहुत बड़ा फ्रॉड था इस दुनिया में, जिसने आज तक कभी प्रॉफिट नहीं बनाया, जिसने आज तक कभी पीओसी नहीं किया। एक टाइम पे थेरानोस की जो सीईओ थी, जो फाउंडर थी, उनको एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बोला जाता था। सो व्हाट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट that we also understand the whole ethos of it. Now, what's the difference between a freelancer and an entrepreneur? Is freelancer not taking a risk? Is freelancer not having an idea? Is he not doing it for profit? He does almost everything. But the very important thing is entrepreneur makes money even when they sleep, right? जब वो सो भी रहे होंगे तब भी उनके पीछे उनका कोई ना कोई टीम का मेंबर या उनका बिजनेस इस ढंग से इवॉल्व हो रहा होगा कि वो तब भी पैसा बना रहा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। एक एंटरप्रेन्योर की सही डेफिनेशन वो है दैट ही बाइज अदर पीपल्स टाइम
to fulfill his very own goal. और इस बात को मान के चलिएगा, इस बात को मान के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक आदमी का खेल नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप एक टीम का खेल है। और इस टीम को बनाने के लिए जिसका टाइम खरीदना जाना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। मेरे घर के बगल में इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छा दर्जी था। मैं उनके पास जाता था, मैं सूट उनसे सिलवाता था और वो बहुत अच्छा सूट सिलते थे, बहुत अच्छा और बहुत सस्ते में। मेरे को रेमंड्स का सूट शायद 12,000 का बाहर से मिलेगा, वो मेरे को 6-7 हजार रुपए में हैंड स्टिच सूट सिल के देते थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, एक तरफ वो एक सूट बनाते थे और दूसरी तरफ रेमंड भी वही दर्जी था जिसके पास 10,000 लोग थे और वो 20,000 सूट रोज के बनाता था। और फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में स्केलेबिलिटी का फर्क होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि आज जो भी अटेम्प्ट किया जाता है वो इसलिए अटेम्प्ट किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में क्योंकि उसको प्रॉफिट बनाना है और एक बड़े लेवल का प्रॉफिट बनाना है। और फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आता है वो है अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी से आपको प्यार हो जाना चाहिए, मोहब्बत हो जानी चाहिए। अगर आपसे वो नहीं होता, ये एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड आपके लिए नहीं है और उसको मत लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी को एक लाइफ का पैटर्न मान के चलते हैं। ये अपने ब्रेकफास्ट में स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी को रोज चबा चबा के खाते हैं। So those are the people who are entrepreneurs and they are jack of all and the king of mindset, right? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जब मैं था, मैं ही अपना एचआर था, मैं ही अपना एडमिनिस्ट्रेटर था, मैं ही अपना प्यून था, मैं ही अपना था क्या हूं, राइट? और मैं ही वो आदमी था जो ऑफिस को खोलता था, मैं ही वो आदमी था जो ऑफिस को बंद करता था, और मैं ही वो आदमी था जो ऑफिस के बिल भरता था, और मैं ही वो आदमी था जो जाके कस्टमर को लाता था और गाली खाता था। और सब कुछ मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था। और फिर वो टीम बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई, बनती चली गई। पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी, चाहे मैं प्यून क्यों नहीं था, मैं राजा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू आर अ किंग इन योर माइंडसेट, you are an entrepreneur. So it's certainly not about the fact कि जी मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मेरा काम एचआर वाली एचआर करेगी, जब तक एचआर नहीं आएगा तो आगे हायरिंग नहीं होगी, हमारा एक्सपेंशन नहीं होगा, हमारा ये काम नहीं होगा, हमारा वो काम नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और एंटरप्रेन्योर चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो जाए, वो कंपनी को उस ढंग से चलाता है कि वो राजा होके भी प्यून का काम करने की हैसियत रखता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस ऑल टुगेदर when you think about entrepreneurship. So important thing is how to become one, right? Is it difficult? It's certainly not difficult. It's all about the mind game. और माइंडसेट को बनाया जाता है। माइंडसेट कोई इंसान, ना मैं या कोई भी आप में से कोई भी, I wasn't given in my DNA. It was to be built and it's based out of experiences. So first important thing is, where do I get my experience? I get my experience by working for someone. And ideally, I will suggest I will work for a small company. Why a small company? A small company gives you a perspective of actually living every single departmental life in that small tenure itself. आप बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को मेरी फर्स्ट जॉब मिली थी, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मिली थी, टाटा टीडी वाटर हाउस के अंदर। उसके अंदर मेरे को एक डिपार्टमेंट में एक छोटी सी जॉब मिली थी और 6 महीने के लिए मैं एक डेस्क पे बैठ के एक काम करता था और मैंने कुछ नहीं सीखा था। मैंने काफी हद तक जो सीखा था वो सीखा था, पर वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। एंड जस्ट टू रियलाइज इट, आई वांटेड टू गो इनटू अ स्मॉलर कंपनी। आई वेंट टू अ स्मॉलर कंपनी, रेलीगेयर, जो आज जिस कंपनी को आप इंडिया में जानते हैं, एक बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल नेम एक टाइम पे होता था और आज फिर से वापस आ रहा है। मैं उसका 4th एम्प्लॉय था। और चौथा एम्प्लॉय होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता था। पानी कहाँ से मिलेगा, कितने का आता है, ऑफिस कब बंद करना है, कब खुलेगा, कंप्यूटर कितने का आता है, प्रिंटर की इंक कितने की आती है, वो आपको पता होती है। कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, हायरिंग कैसे करनी है, फायरिंग कैसे करनी है, पॉलिसी कैसे बननी है, वो आपको हर एक चीज एक टेबल पे बैठ के आप सीखते हैं, बनाना सीखते हैं। और मैं शायद कुछ उन खुशकिस्मत लोगों में था जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, जिन्होंने चौथा आदमी होने से लेकर 4,000 लोगों की टीम बनाने तक का एक सफर पूरा किया। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, एंड आई थिंक टेक ट्रस्ट मी ऑन दिस वर्क्स।
you will vouch for a lot of the people who are very, very intelligent. I am sure IBMs and the Googles of the world will come to take you, but you will never be able to create a Google within a Google unless you really have that mindset. Surinder Pichai was able to make a Google within a Google because he was perhaps the most early entrant into Google in 2000, when the Google was just coming out of its not the bankruptcy, but financial distress in 2000, in 1999 and 2000, right? So that time Google was too small, and he grew with Google to what today he is. Same way is with Satya Nadella, right? So when did Satya Nadella came into Microsoft? Did he came into Microsoft when Microsoft crossed $100 billion valuation? No, never. Microsoft would have been probably like a $4 or $5 billion that time in 1980s, late 80s and early 90s. And same's true for Parag Agarwal, right? That's the new hottest name in the town right now. For Twitter, when did he join Twitter? And how did he became an engineer? From an engineer, he became a CTO. And today a CEO of a company. He's a 37-year-old boy, right? So he joined Twitter quite early. So it's very, very important. Some of the companies that you think is small may not be small tomorrow, but if you work with them and you believe in them, that's more important. Choose a company that's trying to develop a product or service which is relevant for next 3-4 years, right? तो अगर मैं बोलूं कि आज के डेट में मैं किसी e-commerce कंपनी में जाना चाहता हूं, तो I'm not sure whether that's a right thing to do, because the e-commerce as a subject would have evolved. But it also depends what kind of an e-commerce, because e-commerce is also evolving. If it's a futuristic e-commerce which is based on, let's say, augmented reality or a virtual reality or an e-commerce in a metaverse, fantastic. Please go join it right now, right? But if you're doing a conventional e-commerce or actually a company trying to make a store on a Shopify to sell its product, I'm sorry, you're going to waste your time. Your life is going to be a big, big wastage. So you really have to understand, when you go to a company, and a small company who's trying to do a business and wants you need to go into the company to see कि कंपनी का 4 साल का फ्यूचर क्या, इनका होराइजन क्या है, ठीक है, ये करना क्या चाहते हैं, वो इवॉल्व कैसे होना चाहते हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है कि नहीं. That's very, very important. And another most important thing, as an entrepreneur, when you join, you don't join for salary. Salary सिर्फ आपकी बस की, स्कूटर की या बाइक की पेट्रोल भरने के लिए है, राइट? वो आपका खर्चा उठाने के लिए है. सैलरी से आप कभी जिंदगी में अगर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर केस में होगा, क्योंकि जो सैलरी होगी उसका 30 से 33%, 35%, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टैक्स ब्रैकेट यू गो इनटू, तो सरकार ले जाएगी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And then for all your purchases, you will be paying GST, which is another 18%. What do you think? Where in the world you will be when you're actually losing 48 to 50% of your income to taxes, right? So nowhere in the world, you're already 2 steps back to a normal entrepreneurship world. Now understand this and says, okay, that's fine. मेरे को सैलरी नहीं, आप सैलरी दीजिए मेरा खर्चा चलाने के लिए, मेरे को इक्विटी चाहिए, क्योंकि इक्विटी बढ़ती है और इक्विटी के ऊपर टैक्स तब होता है जब इक्विटी को आप बेचते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के डेट में अगर हम बोलें कि टिम कुक $600 मिलियन के आदमी है, वो $600 मिलियन के आदमी सैलरी से नहीं हुआ है, वो $600 मिलियन के आदमी अपनी इक्विटी से हुए हैं. सुरेंद्र पिचाई आज के डेट में $230 मिलियन साल का कमाते हैं, but you really need to understand that 85% of that comes from equity and not from an actual cash salary. So this is what entrepreneurs actually go and do. What entrepreneurs really do, they try to maximize on their profits. They try to maximize on valuation than on cash. And very important, अगर आपको entrepreneur बनना है, learn how to sell. और अगर आपको बेचना नहीं आता तो entrepreneur नहीं बन सकते. क्योंकि मैं जानता हूं और मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये मैंने फेस किया हुआ है, कि जब IBM आपको आपके कॉलेज में लेने आएगी तो हमारे माँ बाप और अगल बगल के लोग हमको इन्फ्लुएंस करेंगे कि बेटा जॉब बड़ी कंपनी में करो, सिक्योरिटी है, पैसे कम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा शादी होना है, तुम्हारा ये होना है. You'll have to convince, you'll have to sell your idea, you'll have to sell the conviction to your parents, to your friends, to your brothers and sisters, to your professors, for that matter of fact. Also, not only that, you have to go and sell yourself to that small entrepreneur who's trying to get your services in.
And it's very, very important and very, very critical. Very important and very critical. If you don't know how to sell, selling necessarily doesn't mean selling to a customer. Selling also means selling to your internal customers, your parents, your friends, your professors, your company, right? Your colleagues. Sometimes you have to sell an idea, convince your colleague to come into you because here's an idea that will make valuations for everyone. So if you don't know how to sell, entrepreneurship just dies that very moment. कल आप बैंक में लोन लेने जाएंगे, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को बेचना पड़ेगा, आपको अपने आइडिया को बैंकर को बेचना पड़ेगा, बैंकर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बैंकर को उस इवैल्यूएशन में जान लगेगी तो आपको लोन देने को तैयार होगा. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, राह चलते भी एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है. बहुत लोग चलते हैं रास्ते पे चलते हुए प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं और बोलते हैं इस प्रॉब्लम को मैं चुटकियों में सस्ते में निपटा सकता हूं, तो क्यों ना मैं ये चीज करूं. और इसका एक छोटा सा उदाहरण ये था कि म्यूजिक रिकॉर्ड बनाते थे रिचर्ड ब्रांसन. एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है. कोई कोई मैनेजमेंट डिग्री नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है. One of the biggest marketing guys that this world has ever seen is Richard Branson. जब उनको एक फ्लाइट नहीं मिली थी वापस लंदन जाने के लिए, उनको रियलाइज हुआ कि ट्रांस अटलांटिक ट्रैफिक कितना हेवी है जिसकी वजह से लोगों को टिकट नहीं मिलती. और जितनी फ्लाइट्स में वो आज तक गए उसके अंदर एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिली जिसके ऊपर लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइसेस भी पे कर रहे थे. So he found a problem and he found a solution and he was able to give a very effective and a competitive service transatlantic, जो आज हम लोग वर्जिन अटलांटिक के नाम से जानते हैं. और trust me on this, today traveling by Virgin Atlantic, even at effective prices, is known as a status symbol. And this is what an entrepreneur does. So much so, इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, and coming from nowhere, this guy was a hippie, and a hippie coming and beating British Airways in their home ground, right, will actually tell you something. Plan or no plan, direction and execution matters. ना उनको प्लान बनाना आता था, ना उन्होंने एक्सेल शीट्स के ऊपर बड़े बड़े प्लान बनाए. To be very honest, on one of the talk shows, I don't know how relevant that would be, but Elon Musk says that he doesn't know what business plan is. So it's not about the plan, because some of these plans are based on assumptions. The number are supposed to change, but a lot of the entrepreneurs actually know their business model and they are convinced by the fact how it's going to really go and make money. So the direction and execution matters. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा ना हो कि आपने एक्सेल तो बहुत अच्छी बनाई है पर उसके बाद कभी डायरेक्शन नहीं ढूंढी ढंग से और ना एग्जीक्यूशन किया. और कब बहुत सारी एक्सेल होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर दम तोड़ देती हैं. So plan or no plan, it doesn't matter. If you have, well and good, right? If you don't have, don't worry about it till the time you're taking a step and you know the direction. And it's very, very important to draw a line between a passion and an obsession. बहुत लोग इस चीज में गलती कर जाते हैं, right? ये गलती मेरे से भी हुई है. मैं समझता हूँ ये मेरा पैशन है, मैं उस पर 18 घंटे काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ. कई लोग आके बोलते हैं कि नहीं मार्केट में ऐसा हो रहा है, ये आप गलत कर रहे हैं. पर मैं बोलता हूँ नहीं ये ठीक है, मैं इतना कर चुका हूँ, मेरे को आगे करना है, मैं और मेहनत करूंगा. पर मेरी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होगा, right? Sometimes you get fixated with an idea and that's where the problem happens, right? So sometimes that reality check really needs to come. जब आपको कोई भी बंदा कोई भी फीडबैक दे, उसको शक की नजर से ना देखें, एक बार वैलिडेट जरूर कर लें. इट मे डेफिनेटली हेल्प यू. कुछ शक पैदा करने वाले आइडियाज भी आएंगे, पर हार्म नहीं है कि अगर हर एक चीज को आप वैलिडेट करके चले, क्योंकि इसमें आपका पैसे से ज्यादा टाइम लग रहा है और अगर टाइम चला गया तो इट्स ऑफ नो रेलेवेंस. So it's very, very important for all of us to understand what's the difference between a passion and an obsession. I've seen entrepreneurs losing their health, in some of the cases even losing a life because of obsession. And that's not entrepreneurship, right? You eventually do things to prove something. You need to live to prove. And, sometimes when it gets too obsessive, I've seen people losing life and losing health, which is definitely a lost deal. No matter how many billions you make, I'm sorry, you already lost the deal when you lost your health. Very important again is पैसा पूरा हिसाब रहना चाहिए, राइट? और अगर आपको अपना पैसा रोज देखने की आदत नहीं है, अगर आपको वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और कैश फ्लो का आने वाला साइकिल अगर आप नजर नहीं लगा सकते रोज, प्लीज
एंटरप्रेन्योरशिप मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी बिजनेस से बाहर जाने वाले हैं. और मैक्सिमम लोग, एंड आई टेल यू राइट, फॉर ऑल द पीपल हु से these many businesses come every day and these many businesses die, मैं आपको एक श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, प्लीज वैलिडेट कीजिएगा, 90% इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस रन आउट कर चुके होते हैं. वो they are dried of their cash because they kept on producing and producing without anyone buying. They had no clue how much was for the money. They had assumption that this was the money in the bank account. And that's where the problem is. मैंने ऐसी कंपनीज देखी हैं जो खर्चा करती चली गई और बाद में पता लगा इतने का तो हमारा जीएसटी बनता था और सॉरी पैसे नहीं है जीएसटी जमा कराने के लिए. वो जीएसटी का पैसा भी लगाते चले गए क्योंकि वो छोटी कंपनियां थी, उनको क्वार्टर में एक बार भरना था. Right, so all of this stuff has happened and I've seen this, right? I've seen this with a lot of small entrepreneurs. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, right? और वहीं से मेरे का रियलाइजेशन था कि you need to have your grip on your financial mathematics, and that's very 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 critical. And then the second most important reason जहां पे लोग मरते हैं, और मैं बोलूंगा अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, पहली बात तो आपकी रेपुटेशन नहीं है, मान के चलिए, ठीक है? और आपकी रेपुटेशन को कोई भाव नहीं देता है. आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी ईगो की भी कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप किसी बैंकर के सामने जाके रोएंगे, मेरे को गारंटी कर दीजिए कि वो आपको बैंक में लोन दे देगा, तो मैं रोने को तैयार हूं. और अगर मैं बोलूं कि नहीं जी मैं इनका लड़का हूं और मैं इतना ईमानदार लड़का हूं, मैं रोज मंदिर गुरुद्वारे जाता हूं, पाठ पूजा करता हूं, मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, प्लीज मेरे को लोन दे दीजिए, आई एम सॉरी, बैंक ऐसे लोन नहीं देता है. और आप बोले जी मेरी ईगो है, मैं कह रहा हूं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलेगा, मैं कह रहा हूं मेरे को पैसे दो. अगर इन तीन चीजों की कोई वैल्यू है, और वैल्यू सिर्फ उसी चीज की है जिसको आप बैंक में जाके गिरवी रख के पैसा उठा सकते हैं और उस पैसे से पैसा बना सकते हैं, तो ये जो तीन चीजें मैंने बोली इसका कोई रेलेवेंस नहीं है मार्केट में आपके लिए. तो ये मान के चलिएगा, योर ईगो, योर आइडिया, योर इमोशन, माय रेपुटेशन हैज नथिंग टू डू. अगर कोई बैंक है जो पैसा देता तो बताइएगा, मैं तीनों चीजें अपने में डालने को तैयार. Right, so I will be waiting for any one of your message telling me that this is the bank, this is the branch, please go deposit your reputation, they are going to give you money. So anything that doesn't give you money, please don't waste your time on it. And because of all the three, I've seen teams getting dismantled. I've seen attrition in the teams because of ego, because people think they are superior. उनकी वजह से ये छोटा सा आइडिया बहुत बड़े बनने वाला है और मैं नहीं करूंगा. Everything starts falling apart. No one gets anything. And this has happened. This has happened many times. And this is still happening with a lot of startups. Fantastic, good idea people. Very, very intelligent people, right? But everyone thinks they're supreme. And that supremacy comes and kills. No one looks at a bigger valuation coming their life. They look at their immediate, what I'll say, emotional satisfactions. And that's what something that creates problem. Now, important is to listen to an execution plan and not ideas, right? हम आइडिया देते हैं, हमारे एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ एक आइडिया पे, उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और वो रोज आके बोलते हैं अरे बॉस ये करना चाहिए, अरे बॉस इसमें हम ये करेंगे, अरे बॉस इसके साथ तो हम ये भी कर सकते हैं. और क्या होता है कि बॉस के आसपास इतने सारे आइडियाज होते हैं और एग्जीक्यूट करने वाला कोई नहीं होता. और ये जो आइडियाज है ना, वेरी गुड टू स्टार्ट, पर जब ये बहुत सारी तादाद में आने शुरू हो जाते हैं ना, ये एक कंपनी के लिए कर्ज बन जाते हैं. Because everyone is thinking that his idea that he's given is the right one and we should dwell upon that rather than the core idea. तो जब तक वो core idea mature भी नहीं होता, लोग because you dealing with humans, you need to understand manpower management is a different skill set than an entrepreneur needs to happen. You need to know how to control the team's emotion as well apart from yours. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो आपको आइडियाज पे आइडियाज देंगे, आपको देखना है where you have to cut the clutters कहां पे खत्म करने चाहिए. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जीक्यूशन प्लान पे ध्यान दिया जाए. जब भी कोई आइडिया लेके बोले ठीक है इसका एग्जीक्यूशन प्लान बताओ, कॉस्टिंग बताओ, फंडिंग बताओ, कैसे होगा, कब तक होगा, फिर बात करेंगे. आप मेरी बात मान के चलिए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, राइट? 99% लोग वापस ही नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आइडिया बना दिया, पर उसको जब वो क्लैरिटी पे लाने के लिए जैसी एक्सेल पे या किसी पीपीटी पे जाएंगे, आलों की हवा खुल से जाती है. So be a solution, not a problem, right? And that's very important. आपको पास दिक्कत ही दिक्कत आएंगी और आप सिपा सलार हैं, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं. You have to take the decision. You have to solve the problems. No one else, right? And they take you as a leader,
बिकॉज दे बिलीव कि आप ही हैं जो सोल्यूशन देंगे. बहुत कम टीम से आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मेरी टीम सोल्यूशन लेकर आएगी और मेरे को कुछ करना पड़ेगा. शायद टीम लेकर ना आए. इफ टीम लेकर आती है, यू आर वेरी वेरी लकी. I'm seriously telling you, you're going to be very very lucky man. आप मान के चलिए कि भगवान आपके सर पे बैठा है, आप ऐसे समझ के चलिए. पर एक नॉर्मल सिचुएशन में, एक रियलिस्टिक सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है. तो सोल्यूशंस आपको ही बनाने पड़ेंगे. वो स्ट्रेस, वो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस, वो जो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स जो रोज सुबह आएंगी वो आपको नाश्ते में खानी है. वो नाश्ते में आपको सोल्यूशंस बनाने हैं. एज सून एज द नाश्ता गोज इन, आपको सोल्यूशंस प्रिपेयर करते रहने पड़ेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं आज हूं वो कल के लिए शायद रेलेवेंट नहीं है. टेक्नोलॉजी is making the world change dramatically, and technology is the fastest depreciating asset at the world in the world right now, right? तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा जो आज आप सीख रहे हैं वो कल के लिए रेलेवेंट नहीं हो. नॉट लिटरली कल, पर मेरा कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी को के अंदर अपने आप को अपडेट करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. मेरे टाइम पे, मतलब आई एम लाइक 43 राइट नाउ, 23 मे बी 20 years बैक, VBA कोडिंग एक्सेल के अंदर एक बहुत बड़ा हुनर माना जाता था. माना जाता था कि जिस आदमी को ये आता है वो आदमी एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट में होगा. मैं कोर्स लेने गया था तो मेरे को पता है, मेरे को 3 महीने की वेटिंग मिली थी. फिर मेरे को कोर्स मिला, मैंने किया, एंड everyone think that I was God because I knew VBA and I can automate Excel, right? Talk about VBA today, no one wants to hire me, right? Because that technology is redundant. There's Python, which is far much more powerful and can automate anything to everything, not only Excel, even an environment which is beyond Excel. So it's very important that you are as good as your experience as yesterday. So type of entrepreneurship, one is a small business entrepreneurship. किसी ने एक चाय की दुकान खोली या उसने 2 लड़के रखे जो जाके चाय देते हैं इधर उधर. Small business entrepreneurship. Not necessarily that small business cannot be a large one. Definitely, majority of the large one all were small businesses at a lot of at some point of time. And small businesses are always good to test yourself, right? Small businesses में आपको proof of concept मिलते हैं कि हाँ जो मैं करने चाह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है. So no harm, start as a small business entrepreneurship. Look at proof of concept and look at developing your processes, look at developing your policies that will help you become a big business. A scalable startup is again something more primarily done on the technology side. This is something that it's done by a team of 5 or 6 people at the most, and they're trying to build up something which is more related to technology or its deliverance of a conventional business on a technological platform, right? And once the proof of concept is done, and when the commercial POC is done, which is commercial commissioning is done, this can actually be scaled up to a different level. And I think SaaS in the world, in the Web 2 economy, has actually shown up that how a small idea can actually be scaled to an international level. Entrepreneurship. So a lot of people think if I go to an IBM, and IBM will never make me an entrepreneur. Might be wrong. If you go to a Google, there are a lot of entrepreneurs within Facebook as well. And I think Metaverse is actually giving a lot of opportunities for a lot of talented people to actually become an entrepreneur within Facebook. You can work in Facebook, and within Facebook, you can actually go and project. So let's say this is something that we do in our startups like Client Fusion, where we call upon entrepreneurs to join us, where we give them a basic salary and then listen to their ideas, and then they'll get them to an execution plan. They actually, within the whole system, start a new company itself, and they become an owner of that company, both in terms of profit, equity, and not only that, they actually become a quasi CEO who's actually managing that company. At some point of time, if that company really wants to go and take a bigger shape, that becomes a standalone company to its parent company, right? This is a most favorable way of doing it because the risk of actually an intrapreneurship is actually far much lesser, and the environment today is very conducive because a company like Google or Facebook, which is Meta now, and even startups like Client Fusion,
do promote that, right? So if someone really thinks that they can do something in the world of RPA very differently, look at our platform, right? Please go to that platform, see what you can do. You will get a basic salary. Tell us what that plan is that you want to hive off as a company. You will get a basic infrastructure to go and start up your company without even putting a dollar in, right? So this is what entrepreneurship, intrapreneurship is all about. Large company entrepreneurships are, you need to be really lucky, right? So you just really need to start at a scale, and you have investors coming at all the place and go and try. QuantumScape is like one of the thing which is trying to do a solid state battery in United States, but it's always started as a large scale company. When it started on the day one, it had a valuation of $10 billion. It's just a valuation of $80 billion at the peak of its thing. It got funding from Volkswagen, it got funding from Microsoft. So it just starts as a large company. It has a large set of people within on day one, and they have all the technical expertise to actually go and kick off everything from a large scale because they believe that they will be able to deliver that. Imitative entrepreneurship, Ola, perfect example, right? You don't put your brains to take someone's idea, implement it, do it rightly. You see what are the best experiences that you can put, getting a motivation or getting a mentorship from other people who've done it. Try to implement it in your geographical domain, or let's say throughout the world, wherever can be with a different experience. It's called imitative entrepreneurship. Very nice way of doing it. Don't waste your time inventing a wheel, right? Just try to put some time on how to make wheels smoother so that it can actually drive faster. Innovative, of course. Uber, of course, was an innovative one. The way that they started the first time, anything which is produced for the first time, QuantumScape is an innovative entrepreneurship, example of an innovative entrepreneurship, because if they do it, what they say by 2024, they will be the first solid state battery company in the world. So they're innovating something like a new technology altogether. Mind you, SpaceLink is not, and Tesla is not innovative entrepreneurship unless Tesla really goes and proves that automated driving has been possible. And buyer entrepreneurship is where the companies go and buy a running business, maybe a struggling or a profitable business, and then try to make it. So for example, Facebook buying Instagram or Facebook buying WhatsApp is a complete example of a buyer entrepreneurship. And a research entrepreneurship. Research entrepreneurship is generally done by highly intellectual people, people who've done PhD, big professors. Philip Kotler, one of the biggest marketing guys that we've seen, has 6 ventures, right? And primarily into research. And their company goes and sells research and consulting to people all around the world. And that becomes a research entrepreneurship. So it's related to academics, and academics actually going and creating valuations for different companies. And hustler entrepreneurship, something like me, I love an idea on somewhere. I can actually go and coordinate things for people in different places and say, let's say, for example, if someone wants to do Thor Global Defense is one of the examples. That's one of the initiatives based out of Arkansas. They develop long-range sniper rifles. We're trying to get them a contract from the government of India. Ordnance factories are no more, but we're trying to work out with Ordnance Factory. So for me to coordinate something with government of India for Thor Global Defense or an HAL to actually mount a semi-automatic gun on some of the helicopters is actually a hustle entrepreneurship, right? This is where we're saying, okay, that's fine. I'm going to go and get your contracts done. I'm going to work this out. I'm going to do that. Thor Global Defense, I'm going to take 10% in equity on this. So that's another way of entrepreneurship, right? Does require investment, may not require investment. Investment is also time. So my take, right? First, my take of all the things. First is no business is a failure. It's like how you manage it, right? मैंने आज तक कोई business नहीं देखा. मैंने businesses को fail होते देखा है, पर मैंने किसी business idea को आज तक failure देखा नहीं, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा बिजनेस आइडिया बनाता है कि उसको फेलियर होना था, तो वो पागलपन कहलाएगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप निकलाएगा, और वो बिजनेस नहीं होता, वो बेवकूफी होती है, और बिजनेस प्रॉफिट बनाने के लिए होता है. सो इफ यू नॉट कंडक्टेड अ बिजनेस इन अ राइट वे, इफ यू नॉट कंडक्टेड द बिजनेस with all your validations, with all your monitoring, business is bound to fail, right?
let's not give an excuse to competition or anyone else or even resources. Loss is never an option. You know, a lot of people actually build कि हाँ हम पहले एक साल नुकसान करेंगे, और जब आपने माइंडसेट में ये चीज बिठा ली है कि पहले एक साल नुकसान होगा, तो आप मान के चलिए प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं. आप बिजनेस इस ढंग से बनाते हैं, आप जितना एंटरप्रेन्योर हर एक प्लान इस ढंग से, अपने खर्चे इस ढंग से बनाता है, अपने खर्चे इस ढंग से प्रपोज करता है कि उसको लॉस कम से कम हो, और एक आइडियल सिचुएशन में पहले महीने से ही प्रॉफिट होने की गुंजाइश होनी चाहिए. इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल. ये सिर्फ माइंडसेट की बात है. रिसोर्सेज आर ऑलवेज इनफ, राइट. और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में बताने के लिए कि मैं आपको बता सकता हूं कि रिलायंस के धीरू भाई अंबानी किसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैदा नहीं हुए थे, राइट. वो पेट्रोल पंप पे ही काम करके कुछ रुपए लेकर आए थे. उन्होंने अपने जुगाड़ लगा के अपने रिसोर्सेज को जो भी था यूटिलाइज करके पैसा उगराया और कंपनी बनाई. तो आप ये मत समझिएगा कि अगर आपको कोई वेंचर कैपिटल नहीं बन रहा है इसलिए आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं चल रहा है. नहीं, ये एक गलत माइंडसेट होगा. आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनकी यूटिलाइजेशन नहीं देख पा रहे. Not getting a venture capital or not getting a seed funding is an excuse. It's not a validated reason. If you're really convinced about your idea, I don't think you will be actually going for a seed capital. You know, I have an idea. I believe it's going to do well. मैं किसी को फ्री फंड में सस्ते में इक्विटी क्यों पकड़ा दूंगा सीड फंडिंग के लिए, राइट. पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Until unless it's like too much of seed funding and blah blah blah. बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हर इंसान के पास कुछ रिसोर्सेस होते हैं. और अगर आप जॉब करके आ रहे हैं तो कुछ सेविंग करके आ रहे होंगे, कहीं से पीछे से कुछ करके आ रहे हैं, और एक्सपीरियंस लेकर आ रहे होंगे. अगर आप ये सब लेकर आ रहे हैं, आई सपोज यू हैव द मनी, द रिसोर्सेज आर ऑलवेज इनफ फॉर यू. Raise the equity after the viable POC. पैसा उगराने के चक्कर में there are lot of people who will say, okay, ठीक है, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूँ, और आपसे इक्विटी ले लेंगे. Bhavesh Agrawal, I think his name is Ola. He just owns 3% of Ola. He doesn't owns more anything about Ola. Even if Ola comes out with an IPO, this boy will not make money, right? Because everything's diluted. They've worked. He's worked very, very hard. Fantastic that he's reached. His 3% are still worth millions and millions of dollars. But what I'm saying is where would have been, right? So let's to understand why is Mukesh Ambani the richest, now probably second richest. I don't know, that keeps on just swapping up and down, but that's what stock market's all about. Why he's richest? Because he owns 33% of his company. Why is Jeff Bezos the second richest? Because he owns 33% of the company, right? You need to have a significant stake in your company at any point of time. So please don't rush into actually going and raising capital because you are scared and you don't believe in your idea. That means you don't believe in your idea. So raise equity when your viable POC is done. You then are in a better position to negotiate valuations. And keep evaluating the exit plan, right? Any business which doesn't have an exit plan is always a failure. अगर आपके बिजनेस को खरीदने वाला नहीं है कोई, तो उस बिजनेस की कोई वैल्यूएशन है नहीं. और हर बिजनेस का एग्जिट प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इनफैक्ट लाइफ में हर एक चीज का एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यू रियली डोंट नो टुमारो. एवरीथिंग टू एनीथिंग कैन गो रॉन्ग. Collaborate rather than compete. I do believe that competition is for fools, right? People who say, I will take on the competition is the biggest fool. He will only burn his resource. He will only burn his energy. People who collaborate are the biggest beneficiary of all. And people who collaborate, they actually gain a lot from other people's experience. Competition probably may give you an experience. It might be a one-sided experience. Collaboration actually gives you two-sided experience. It has the other company also collaborating and giving you their best. And then collaboration generates wealth. Competition may generate wealth, but before generating wealth, if you're successful, it will also deplete your wealth, right? You have to put cash to fight the competition. Customer service is always not profitable, guys. You need to understand कि आपका value proposition क्या है, और कभी कभार आपका value proposition customer service नहीं होगा, और necessary नहीं है कि customer service value proposition हो. And it's very, very important that we need to understand that sometimes customer service is certainly not profitable. It's worthwhile giving it a skip, and especially in products where people have a great stick rate. If you have a stick rate, you need to evaluate to what extent you really need to give a customer service, right? I'm not saying that a customer service should be zero, but what I'm saying is the customer service should not be
overwhelmed completely that you just keep on depleting your margins. तो हमको जो बुक्स में समझाया गया है और जो एक्चुअलिटी में होता है उसमें डिफरेंट होता है, और हमको दोनों चीजों को एक अलग तरीके से समझना होगा. नो द लॉ ऑफ द लैंड वेल. लॉज ही नहीं पता है तो यू विल गेट इनटू अ ट्रबल. और अगर लॉज नहीं पता है तो आपको अपने राइट्स नहीं पता है. अगर आपको लॉज नहीं पता है तो आपको अपनी कंट्री में जो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है आपके स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए, आपको उनके बारे में नहीं पता है. सो इफ यू नॉट रीडिंग व्हाट गवर्नमेंट हैज टू ऑफर, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द गेम, बिकॉज लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एक्चुअली स्टार्ट विद द गवर्नमेंट ऑन देयर साइड, राइट. और चाहे वो स्टारलिंक हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो अमेजोन हो, गवर्नमेंट उनके साथ है. देव रेड द लॉज परफेक्टली फाइन and they don't pay taxes, right. और वो taxes किसी स्टेट के अंदर जब एंटर करते हैं तो टैक्स ब्रेक मांगते हैं. आज भी हमारे इंडिया में कई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए टैक्स ब्रेक मिलते हैं. कई बिजनेस स्टार्ट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, कई स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है. सो आई एम नॉट श्योर वेदर यू रियली नीड टू गो डाउन टू वेंचर कैपिटल or you really need to go down to the bank. If you have a valid idea and that works, government of India, please dial in. It's so sophisticated now and it's very, very much easy. Yeah, and another thing is, please don't make any expenditure till the time you don't have 6 months cost in your bank account, right? One more COVID can finish you off. I've seen this happening. People live by, invoice to invoice. कोविड के महीने में तीन महीने इनवॉइस नहीं आई और कंपनी बंद हो गई. और 6 महीने की इनवॉइस होती तो 6 महीने के पैसे अगर बैंक अकाउंट में होते तो सैलरी टाइम पे जाती, बाकी कॉस्ट निगोशिएट हो जाती. यू वुड स्टिल हैव समथिंग टू फाइट. Some of the brilliant people, because their financial mathematic wasn't correct, they lost their company. Brilliant people, I'm telling you, very, very brilliant people. They lost their company because their financial mathematics and they didn't had buffer in their bank accounts to run the company in trouble times. And trouble is guaranteed. जब आप बिजनेस कर रहे हैं, trouble is guaranteed. मतलब ये वक्त की बात है कि आज है या कल है. तो उस दिन के लिए आपको ये 90 पॉइंट का 6 महीने का कैश अपने बैंक अकाउंट में रखना बहुत जरूरी है. उसके बगैर बिजनेस को ध्यान से चलाइएगा, खर्चे मत रखिएगा. Get a coach and a mentor, and the way I look at coach is someone who's looking from you from outside, right? So जैसे वो तेंदुलकर थे ना, वो तेंदुलकर इसलिए नहीं बने क्योंकि वो बहुत अच्छे बैट्समैन बन गए, क्योंकि वो पैदा ही बहुत अच्छे बैट्समैन हुए थे. तो उनके जो कोच थे, I'm sorry, I don't know the name, वो उनको बाहर से देखते थे. वो देखते थे कि उनका फुट कहाँ जा रहा है, उनकी नीज कहाँ जा रही है, उनका हैंड कहाँ पर है, उनका बैट कहाँ पर है, बैट का एंगल क्या है. वो एंगल आपको नजर नहीं आएगा, वो फुट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी आंखों के नीचे है. Coach and a mentor is someone who's looking from you from outside and he tells you your mistake, right? When you do businesses, and I've done tons and tons of mistakes. I've been very fortunate. I have Sudhakar Ramasubramaniam as my mentor, who was the CEO for Aditya Birla Bank, right? Payment bank. And he's now the chairman on the FICCI. So, I do anything wrong, he knows it, right? He corrects me. If I have any trouble, I know who to go to. So he's my go-to man. I know where I'm going to get the right information, where I'm going to get the right coaching to correct my mistakes and move on. Plus, this coach has experience, which is so much valuable. So get a coach, get a mentor. A lot of your professors in your university right now are your coach, right? So go and take someone's mentorship. It says, this is what I want to do, coach. Help me, keep on looking at me, embrace me with all your critical analysis. Tell me what's going to make me better. और एक चीज, ये 11वें नंबर की मिस्टेक मेरे से हुई, राइट? दोबारा मत दोहराइए, ये तो कोई भी मत दोहराए. मैं कहता हूं, प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करने में इतना पैसा मत खर्च दीजिए कि उसको बेचने का पैसा ना रहे. If you don't have the marketing and the sales buffer, I'm telling you guys, if you do fantastic marketing and you have a great sales mechanism, even if you have an average product, you will make money. पर अगर आपने एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, पर वो कभी कस्टमर को सामने सर्व ही नहीं हुआ, कभी उसका मार्केटिंग हुआ नहीं, कभी उसका सेल हो ही नहीं पाया क्योंकि बजट ही नहीं रखा गया था, वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा. और प्रोडक्ट में एक प्रॉब्लम है, और खासकर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, ये एक खाने की तरह है जो प्लेट में रखा गया. अगर इसको एक सही टाइम पे नहीं खाया गया तो ये खाना खराब हो जाएगा. तो टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ही प्रोडक्ट होता है. आप ये मत समझिएगा किसी भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो 5, 6, 7, 8 साल है. 1 साल से ऊपर शायद नहीं है, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई होती है और तब तक आपके कंपेटिटर आपसे आगे निकल गए होते हैं. पर कोई चीज जो आपको हेल्प कर सकती है कॉम्पिटिशन में, वो कैश फ्लो. और कैश फ्लो आएगा आपकी सेल्स से, और सेल्स आती है मार्केटिंग से. सो प्लीज सेल्स का बजट
और मार्केटिंग को प्रोमिनेंटली अपने प्लान में रखिए और उस पैसे को बिल्कुल मत छेड़िएगा, राइट? ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ प्रोडक्ट बनाने में लगा दिया और जब प्रोडक्ट बेचने का बाहर आया, ठन ठन गोपाल, और प्रोडक्ट भी खत्म और कंपनी भी खत्म. एंड दिस रियली डज हैपेंस. And telling you this really happens. So why businesses fail? First is the cash burnout, right? Another is team attrition. Generally ego की वजह से होती है. बहुत लोग मार खा के चले जाते हैं. मैंने आज तक कोई आदमी को अपनी कंपनी में सैलरी लेट होने की वजह से छोड़ते हुए नहीं देखा, और मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि हमारी सैलरी कभी कभार लेट हुई है जब हमारे पास 6 महीने का कैश नहीं था, और तब से हमने 6 महीने की कैश की पॉलिसी बनाई. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई पुट इन दिस प्रेजेंटेशन गाइस is based on hardcore experience. And a good intelligent man is someone who learns from someone else's experience, right? And कभी कभार हम प्रोडक्ट इसलिए बनाते हैं कि हमारी इंट्यूशन कहती है कि नो, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, और इंट्यूशन के चक्कर में पता लगता है हमने मार्केट रिसर्च नहीं करी और उस प्रोडक्ट का मार्केट ही नहीं है. और दूसरा इनफ्लेक्सिबिलिटी, विच मीन्स आई एम ऑब्सेस्ड विद माय आइडिया. नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम में एक पोस्टर ने बोला है कि लोग चाहे जो भी बोले, जो तुम सोच रहे हो तुम वही करो. तो इंस्टाग्राम के जो पोस्ट हैं, जो फेसबुक के पोस्ट हैं, टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज अगर सारी दुनिया के पास ये पोस्ट है तो इस दुनिया में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. डू बिलीव दैट यू कैन गो रॉन्ग, राइट? डू बिलीव. Don't be obsessed with your idea. Be very open to ideas, be flexible to ideas, and move on. Another is compliance, right? Understand the compliance. आपके बिजनेस को गवर्नमेंट मार सकती है, एक रात में मार सकती है, रातों रात खत्म हो सकता है. लॉ से पंगा मत ले, लॉ को समझ के चलें, एडवाइस लें, be on the right side of the law. If you be on the right side of the law of the land will help you develop your business going forward. And UX, which is the user experience. Make your product as simple as possible. I've been guilty of actually making products with very, very heavy features, and they turned out to be fantastic product because they had features, but no one bought them because they were too complex, right? Eventually, I had to go and make them very simple to serve them back, which was an extra expense and extra time that we lost. So another thing is, make a simple thing, which is solving a problem, something very intuitive for a layman who doesn't know coding should be able to make it and do it. That's important, right? This is what makes WhatsApp very convenient, right? A 670-year-old man or a woman can use it. So is the 13-year-old boy. And be decisive. There's nothing like a wrong decision or a right decision. I do believe there is only like not taken in time decision and on taken time decision. So what that essentially means is, अगर कोई गलत डिसीजन है भी और आपने सही टाइम पे ले रखा है तो आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा. और किसी डिसीजन की गारंटी नहीं होती, आप हर एक चीज सब्जेक्टिव होती है. बट बी डिसाइसिव. यू थॉट दैट दिस इज अ डिसीजन, प्लीज गो हेड एंड डू इट. डोंट डू इफ एंड बट. डोंट डिले एक्शंस. दैट विल हर्ट यू मोर देन अ रॉन्ग डिसीजन. So the fact, so average success ratio of a startup founder is 45. Everyone knows this. हर एक ने पढ़ी है, ये validated information है, ये Harvard Business Review की information है. It's very much validated. Experience counts. बहुत कुछ समझ चुके होते हैं आप. Whether it's your what do you say, चाहे आपका HR के perspective से हो, चाहे टेक्नोलॉजी के perspective से हो, चाहे स्प्रिंट्स कैसे रन करनी है, प्रोडक्ट है, कस्टमर सर्विस है, सेल्स है, आप हर चीज सीख कर आए होते हो. तो सक्सेस काफी हद तक प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि there's an experience that is backing you. Even if you're young, don't mind. Go take your call, but have some money, have some experience, at least 2 to 3 years that you've understood. Nothing's running away. So and opportunities come. Keep on evaluating your opportunities. Tell me one success story. अगर कोई अभी बोलता है मेरे को एक सक्सेस स्टोरी दुनिया में दिखाता है जो वन मैन शो थी, मैं अभी प्रेजेंटेशन बंद कर दूंगा और मैं सॉरी बोल के चला जाऊंगा. मेरे को आज तक एक भी स्टोरी ऐसी नहीं मिली जो सिर्फ एक आदमी ने अपने बलबूते में सक्सेस बना दी हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आज की डेट में प्रोफेशनल हो, राइट? सो डोंट थिंक, even if you are the man of the show, it's not Mark Zuckerberg. If you take Mark Zuckerberg out of Facebook, it will run better, maybe better tomorrow, right? So not necessarily के one man show होना, एक one man show कोई सक्सेस की गारंटी तो है ही नहीं. ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है. So 82% of the businesses do fail because of cash management. This is actually a fact.
69% of the entrepreneurs actually started their business from the home. या इस 69 पे मैं भी हूँ. In fact, मैं कम से कम 4 बार इसी 69 में हूँ, क्योंकि my every business starts from my desk at home. और जब तक मेरा कैश फ्लो नहीं बनता है, तब तक मैं अपना कॉस्ट फ्लो नहीं बनाता हूँ. और ये मेरा पहला प्रिंसिपल है. So I don't want to take the money from my father or my mother, my wife, and take from my saving and put into the business. That's a stupid way of doing business. To me, at least. Only 8% of the entrepreneurs indicated that they have the desire to make money, right? So paisa, profit, and money are two different things, right? A lot of the entrepreneurs, and almost 100% of the entrepreneurs, want profit. Reason? Profit leads to valuations, right? So the valuations is what entrepreneurs always look at. They don't look at money कि मेरे को पैसा चाहिए क्योंकि मेरे को अपना घर चलाना है या मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपए हो जाए. वो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है. उसकी सक्सेस उसको तब लगती है, दे एंजॉय व्हेन देयर टीम फ्रॉम 5 पीपल गो टू 45 पीपल. वो एक रूम से 4 रूम के हो जाए या एक बिल्डिंग के हो जाए, चाहे उनकी जेब में फिर भी पैसे ना हो, और वो उनके लिए सक्सेस होती है. और एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रॉफिट डिजायरिंग, मनी मेकिंग का ये हिसाब भी आपको बता दूं कि 1995-1996 में अमेज़न स्टार्ट हुई थी. उसने पहला पैसा बनाना शुरू किया था 2016 में, right? तो उन्होंने वो tenure देखा था, but all this tenure they were growing in valuation, which was more important because their business was on right track. They were making, they were getting the business in the right way, and they were evolving with every single year. Even after the financial crisis, they actually grew significantly. So they were on the right track. Their direction was right, but it was not done by Jeff Bezos to make some 100,000, 200,000, a million, or $2 million. He was always counting on valuation. And today, what he has as 300, I think, whatever, 180 or 300, I really don't know what that valuation is. It's immaterial to me, even to him, I suppose. वो जो valuation है, that's not money. That's valuation. That's wealth. Wealth and money are two different concepts. So we really need to understand that only 8% of the entrepreneurs, and especially the small entrepreneurs, look for money. They don't look for, they will be looking for valuation, but primarily money. But 92% of the people, they're looking at valuations. The average number of businesses by an entrepreneur is 2. Yeah, this is also validated by Harvard Business Review. You can go and say it, right? So every entrepreneur, because a lot of the entrepreneurs actually have a failure rate, and even with the failure rate, so there are very many of them which will come for a second chance because they've learned a lot. And failure actually gives you, आप मान के चलिए कि मैक्सिमम केसेस में फेलियर आपको एक अलग लेवल की ताकत दे देता है कि नहीं, एक शॉट और मारेंगे यार, अब मेरे को समझ आ गया करना क्या, राइट? सो दीज एंटरप्रेन्योर्स आर लाइक, दिमाग से पागल लोग. फतूर मैं पागल नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा ढीठ लोग होते हैं. दे आर लाइक सिंगल माइंडेड पीपल. दे नो दैट दे कैन डू इट. दे विल गिव इट अ सेकंड शॉट, दे विल गिव इट अ थर्ड शॉट और अ फोर्थ शॉट. तो एवरेज जो नंबर आता है वो 2 लोगों का आता है एंटरप्रेन्योर पे. And guys, in technology and in a lot many things right now, last mover is also an advantage. You don't need to be the first in the world. You can wait as a gorilla. When the time comes, you can strike it. That's again an entrepreneurship, and it's a fact, right? हमने सुना है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आज हम मान के चलिए कि लास्ट मूवर भी एडवांटेज होता है. सो आप कभी ये मत समझिएगा नाउ द शिप हैज गॉन. Don't worry on that. Take that idea. If you can improvise it and you can take it to the next level of customer experience, you have it, right? You're killing the giant. Okay, another thing. Bankruptcy is not a crime, guys, right? It's a law. So bankruptcy कल को जैसे कहते हैं वो दिवालिया हो गया. हम इंडिया में एक बात सोचते हैं, अरे वो दिवालिया हो गया तो ऐसे लगता है जब बदनामी हो गई यार पूरे शहर में, ये क्या हो गया. कोई आदमी माँ की कोख से पैदा नहीं होता बैंकरप्ट होने के लिए, right? Neither was I born, right? But bankruptcy is law, and it's given me a safety net to go and start an entrepreneur life. And if I start an entrepreneur life, I will be able to give livelihood to 45, 50, 500, 5,000, 50,000, God knows, families. I become an asset to an entire economy of my country. So bankruptcy is not a crime, right? If someone says, कुछ लोग भाग गए इंडिया छोड़कर, वो इसलिए भाग गए क्योंकि बैंक्रप्सी का जो पैसा था उन्होंने वो साइफन किया. अगर बैंक्रप्सी वो एक्चुअल बिजनेस में लूज कर गए होते, so it's certainly not a crime. और अगर उन्होंने बैंक्रप्सी का कोई भी पैसा साइफन ऑफ नहीं किया है, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, don't call them भगोड़ा और don't call them bankrupt, don't call them दिवालिया. वो आपका पैसा या बैंकों का पैसा नहीं लेकर गए.
They did a normal business transaction and they lost it. It's a law. If the law has to decide, it's not you and me or anyone else who's going to decide. So when you go back to your family, tell them when you take risk, there is a law that actually comes and protects you, that protects your family, that protects your current assets. That's how companies are made. You really need to understand what kind of a company do I have to move it, whether it has to be a private limited company or it has to limited liability partnership, right? And if at all something really goes wrong and you have to pull your hand and says, I'm sorry, country, I know it's taxpayers' money, but I tried to do something that would give tax back to the company. I'm sorry, I lost it. I have a law on my side. Let me give another chance. 90% of the fastest growing company on NASDAQ has a debt to equity ratio of 0.86. तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर उनके पास $1 की equity है तो उनके पास 86 cents का debt है. So debt is not a bad thing, right? Debt is used to leverage. Leverage is important to expand. And if you think that you can actually handle this leverage, it's a two-edged sword. प्लीज डू, राइट? अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बनाइए, बैंकों के साथ रिलेशनशिप बनाइए, बैंक मैनेजर्स के साथ रिलेशनशिप बनाइए, और जब जरूरत पड़े उस कैश को एक्सेस कीजिए. उस कैश को एक्सेस करके अपने बिजनेस को बढ़ाइए. एंड व्हेन द मार्केट फॉल्स, यू माइट नीड सम ऑफ दिस कैश टू बिल्ड अप द बिजनेस. Nationalism can be a strategy. It's not a tactic. And this is how the world is evolving, guys, right? This world's evolving in a very different way. A lot of countries are going towards protectionism. And you need to understand it becomes a very, very big ecosystem for a lot of you to be successful within your country. आप इंडिया में हैं, ट्विटर की जगह कू है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. क्या चेंज हो कि गूगल की जगह कुछ और हो. कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अमेजोन को मार पड़े और फ्लिपकार्ट भी किसी इंडियन कंपनी के पास हो या किसी रिलायंस जियो के पास हो. वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज डायनामिक्स, और इस डायनामिक्स को प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया या कोई भी कंट्री अपने आप में किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है. अगर श्रीलंका जैसे छोटे देश की भी बात करें, वहां पे भी इतनी मार्केट है कि अगर सिर्फ एक ही कंपनी उस चीज को रूल करे तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकती है. सो नेशनलिज्म फॉर लॉट ऑफ कंपनीज टुडे इज अ स्ट्रेटजी, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, एंड इट्स नो मोर अ टैक्टिक. And money is the least contributor. So what are investors looking into you? Execution gets value over the idea. आप execution बताइए, idea मत बताइए. उनका idea बहुत है और कई idea वो सुनना भी नहीं चाहते हैं. वो सुनना चाहते हैं कि आप करोगे कैसे और किस अलग तरीके से कर रहे हो. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपने बोला सर ये पूरी दुनिया का प्रोडक्ट है, वो उसी वक्त भाग जाएंगे, क्योंकि कोई प्रोडक्ट पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता. आज की डेट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मार्केट सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल. अगर आप अपनी प्रिसाइसली मार्केट सेगमेंटेशन डिफाइन कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स आपको एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे. स्केलेबिलिटी इज द की, गोज विदाउट सेइंग. अगर आपका बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता तो इन्वेस्ट कौन करेगा? सस्टेनेबिलिटी इज क्रिटिकल. कहीं ऐसा ना हो कि स्केल तो हो गया, लोगों ने माल तो खरीदा, पर बाद में लोगों ने बोला या कोई कंपेटिटर आया और आप पता लगा एक साल बाद आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किसी को नहीं है, एवरीवन मूव्स ऑन. You know, you finished. No one wants to invest for 1 year, 2 years. They always want to see what are your long-term strategy and how do you protect and how does the sustainability of a product actually is. UI and UX matters. और वो competition से कैसे differ करता है, दिखता कैसे है, दिखता बिकता है, अच्छा दिखता है तो खरीदा जाएगा, और आराम से चलता है तो पक्का ही खरीदा जाएगा. और फिर लोग आके देखते हैं कि भैया टीम क्या है, एक आदमी का खेल है. अगर एक आदमी प्लेन के अंदर बैठा हुआ किसी दिन नीचे हो गया, हमारी तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई. तो एक आदमी पे कोई काउंट नहीं करता है, टीम पे और उसके स्किल सेट पे काउंट किया जाता है कि अगर इसको कुछ हो भी गया, कल को ये भाई साहब को कोविड हो गया और ये हॉस्पिटल के वेंटिलेटर से बाहर नहीं आए, तो कंपनी चलती रहेगी. और ये हर एक इन्वेस्टर का बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा. कैश फ्लो बहुत ज्यादा काउंट करेगा. अभी तक का कैश फ्लो आपका कैसा है? और अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी पहले से दिखाएंगे तो वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, आपको ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा. आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हुई या एक कंपनी का पूरा स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल होने के बाद भी तो एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी. एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बॉडी लैंग्वेज. आपका बताने का तरीका बता देगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं. अगर आप सच भी बोल रहे हैं, आप कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ये सब चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में होंगी. मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभार कई इन्वेस्टर डेक फोरम्स के ऊपर ऐसा भी होता है कि they have cycle, they have people from the psychology department looking at your body language.
So they will have 3 or 4 set of people, someone who's looking at your body language trying to read, another one taking notes on your claims, and there is someone on the other end who's looking at your claims there and there, whether it's right or wrong. So it's a very, when you go to some of these big investors, don't think that you can actually make a fool out of them. They've been in the game for long. You can fool them a bit, but I won't say fool. Like, you can actually mince your word a bit, but don't try to be over smart. You will be caught the day one. Even if you have a brilliant idea and they find credibility issues, I'm sorry, the game's over there. And then the investment utilization plan. पैसे आपको चाहिए, जितने चाहिए मिलेंगे, देंगे. पैसे की भरपूर अवेलेबिलिटी है बाजार में सब, राइट? और जब तक इंटरेस्ट रेट यूएस फेड इतने नीचे रखेगी, जो अब बढ़ेंगे, पैसे की सप्लाई रहेगी, और पैसे की सप्लाई जल्दी जाने वाली नहीं है. तो पैसा है, पर इस पैसे का करेंगे क्या? उसका नतीजा क्या निकलेगा, राइट? ये पैसा आप प्रोडक्ट बनाने में लगाएंगे, या मार्केटिंग में लगाएंगे, या बिजनेस को स्केल करने में लगाएंगे, या बिजनेस के एक्सपेंस उठाने में लगाएंगे? और अगर आप बिजनेस के एक्सपेंस उठाने में लगा रहे हैं बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, I'm not sure any investor is going to put, but if it's for marketing, it's for expansion, it's about developing new team and a product, improvisation, yeah, you have the money. You should actually go and get that. And all the claims and the market data जो भी आप दें, आप उसको substantiate जरूर कर दें कि ये कौन से सोर्स से आया है, ताकि वो आप बता सकें कि हाँ जी ये सोर्स से आया, उनको ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, और वो बोलें कि हाँ ये भाई साहब अपना सब्जेक्ट तैयार घर से करके आए हैं. So he knows the subject, and that becomes very important. So that's all from my guys. I'm now open to take any questions that you have. So thank you so very much. I think I've been extempo all that while. I do need a sip of water, and yeah, we're good for an open house, and then we can take over your questions for next 15 minutes before I sign off. Okay, thank you so much, sir, to give this wonderful session. And I hope so every participant grab the lots of knowledge about how they can start the startup, how they can start the business by their own. Okay, so thank you so much, sir, for this Thanks a session. lot. Thanks a lot. Okay, sir.